Hello everyone, we are discussing the third chapter of biology of 9th class, that is diversity in living organisms, in which we are discussing the types of vertebrates. We have already discussed the basic or general characters of the class Cyclostomata, Pisces, Amphibia, Reptilia, and now we will talk about the general characters of apes. So let's get started. We are discussing the chapter diversity in living organism. Diversity in living organism, in which we are talking about the types of vertebrates. Types of vertebrates. Division vertebrates have 6 classes. And now we will talk about the general characters of apes. General character of class apes. This class includes birds. So its first feature is it includes birds. Most of them are flying birds. Most of them are flying. Few are flightless. For example, ostrich. Ostrich is a bird that cannot fly. Example is ostrich. So ostrich is a bird that cannot fly. Now let us see the most common examples. Crow, C-R-O-W, crow, parrot, peacock, pigeon, duck, ostrich, vulture, and so on are the example of birds. Now let us see the another feature, that is the flying mechanism of the birds, that means how they fly. In second feature we will discuss the flying mechanism of bird. Flying mechanism of bird, that means how the birds fly. So for flying, 3 features are required here, that is the streamlined body. Streamlined body in which the 2 ends of the body is tapering or sharp. 2 ends of body are tapering or pointed, and the mid part is broader. Mid part is broad. So the streamlined body helps in flying.
streamlined body in which the two ends of the body are tapering and pointed, and the mid part is broader, that enhances flying. The second feature is wings. Presence of wings is also an important feature. So in case of birds, four limbs is modified into wings that helps in flying. This wings helps in flying. The forelimb of bird is modified into wings, and that helps in flying. Now the third feature is light body. As the endoskeleton of bird consists of bony structure. Its endoskeleton of bird is a bony structure, and this bony structure consists of long and hollow bones, and these hollow bones are filled with air cavities. Bony structure having long and hollow bones. In which air cavities are present. These air cavities are present in the long and hollow bones of birds. So this feature is known as pneumatic feature. Found in birds. So the light body is also essential for flying. Endoskeleton of birds is made of bony structure, and this long and hollow bones contains air cavities that makes the body light and helps in flying. So these are the three important things that is required for the flying, and that helps in the flying of birds. Next feature is presence of feathers. Now what is feathers? The outer body of bird is completely covered by a skin called feather. So here the bird also has a unique feature. It has feathers. Having feather is a unique feature of birds. Helps in maintaining constant temperature. This feather help in maintaining constant temperature of body and helps in and works as blanket. This feather works as blanket, covers the complete body of bird and keep them warm. So this is the presence of feathers. Next is hind limb. That may be present at the lower part of the body. This is pentadactyl. That means dactyl plus claws. That means it has 5 digits, and these digits have long and sharp nails. This is called claws. Claws is the
long and sharp nails, and this also helps in hind limb also helps in walking. This hind limb helps in walking, swimming, and so this hind limb also helps in walking, swimming, clasping the branches of trees. Clasping means holding. So this is about the hind limb. Now next is another new structure is found in bird, and that is beak. That is a new structure is the beak. This beak performs the role of this beaks help in picking of object, picking objects, feeding, drinking, picking objects, and so on. This beak also perform different role in birds. Okay. Now let's see the other features like respiration. How birds respire. Birds have developed lungs, so they respire by lungs. Birds respire by lungs. And if we talk about the circulatory system, birds' heart are four-chambered. Their heart is four-chambered. That means this is the first vertebrate that contains a well-developed heart as well as lungs. So their heart is four-chambered. Next is it is oviparous. Oviparous, that means they lay eggs. Oviparous are those organisms that lay eggs. So remember here that they lay eggs on land because their eggs are also covered by hard shell on land, and they lay eggs on land and their eggs are covered by hard shell. Eggs are covered by hard shell. Hard shell as in case of reptilia. The next feature is they are warm-blooded animals. Warm-blooded. This is also a unique feature of aves or birds, that it is warm-blooded animal, and here is another term used for warm-blooded, that is homoeothermous. Homoeothermous, that also means warm-blooded animals. The important thing about warm-blooded animal is that their body temperature remains constant throughout the year in all type of weathers. So they maintain constant body temperature throughout the year.
नाउ लेट अस हैव अ क्विक रिकैप इन हिंदी। आज हमने पढ़ लिया है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास एव्स के बारे में, जिसमें कि शामिल हैं बर्ड्स। इनमें कुछ बर्ड्स तो फ्लाइंग करती हैं, इनमें ज़्यादातर बर्ड्स फ्लाइंग करती है, जबकि कुछ एक्सेप्शनल केस में फ्लाइटलेस बर्ड भी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, जो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। बर्ड्स तो हैं पर ये फ्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इनका एग्जाम्पल है क्रो, पैरट, पीकॉक, पिजन, डक, ऑस्ट्रिच, वल्चर एंड सो ऑन। द नेक्स्ट फीचर इज़, अब देख लेते हैं कि बर्ड्स फ्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट थिंग है स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी जिसके कि दोनों एंड्स शार्प होंगे और जो मिड पार्ट है वो ब्रॉड होगा, तो इसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं और ये फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो सेकंड थिंग है वो है विंग्स, प्रेजेंस ऑफ विंग्स, विंग्स हेल्प्स इन फ्लाइंग। एंड थर्ड थिंग इज लाइट बॉडी, लाइट बॉडी ऑल्सो हेल्प्स इन फ्लाइंग। सो द एंडोस्केलेटन जो होता है बर्ड्स का, वो बोनी स्ट्रक्चर से बना होता है। लंबे और खोखले बोन्स होते हैं जिनकी की अंदर एयर कैविटीज़ भरी होती है और इसकी वजह से बॉडी हल्की होती है और फ्लाइंग में मदद मिलती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। फेदर्स स्किन का, बर्ड्स का जो स्किन है वो कम्प्लीटली कवर्ड रहता है फेदर्स से, ठीक है। और इन फेदर्स का भी काम होता है, ये वर्क करते हैं एज ब्लैंकेट एंड कीप देयर बॉडी वार्म। ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं। और नेक्स्ट है हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब ये पेंटाडेक्टाइल होते हैं, इनमें 5 डिजिट्स और फिंगर्स होते हैं। क्लॉज यानी शार्प नेल्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं वॉकिंग, स्विमिंग और ब्रांचेस को होल्ड करने में, पकड़ने में। बिक होता है इनके पास यूनिक फीचर जो कि ऑब्जेक्ट्स को पिक करने में, फीडिंग में, ड्रिंकिंग में मदद करते हैं। अगर रेस्पिरेशन की बात करें बर्ड्स में, तो इनके पास लंग्स होता है, डेवलप्ड लंग्स होते हैं। इनके पास हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल होता है। याद रखें कि एव्स जो है पहला वर्टिब्रेट है जिसमें कि हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड होंगे और इनके लंग्स भी डेवलप्ड होते हैं। और इनकी एक और ख़ास बात होती है कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। अब तक हमने रेप्टिलिया तक देखा कि सारे ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड हैं, जिनका कि बॉडी टेम्परेचर जो है बदलता रहता है बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से, जबकि जो एव्स हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं और उनका जो टेम्परेचर है, दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। इन ऑल टाइप्स ऑफ वेदर दे मेंटेन देयर कांस्टेंट टेम्परेचर। ओवीपेरस होते हैं, वो ले एग करते हैं ऑन लैंड पर, उनके भी एग्स कवर्ड होते हैं हार्ड शेल से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एव्स. And in the next episode, we will talk about the general characters of the mammals. Till then, goodbye. Thank you.